मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटेड इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटेड इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a
murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंड ट्रैक वॉज कंपोज बाय अनु मलिक। द फिल्म फॉलो ए यंग मैन प्लेड बाय खान seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंड ट्रैक वॉज कंपोज बाय अनु मलिक। द फिल्म फॉलो ए यंग मैन प्लेड बाय खान seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding
with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most
iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty and Malik in Hindi film, and the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Released date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi. बजट 3 करोड़. बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे. बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film, and the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Released date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi. बजट 3 करोड़. बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे. बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film, and the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक.
Distributed Eros International, release date 12 November 1993, running time 182 minutes, country India, language Hindi, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटेड इरोस इंटरनेशनल, रिलीज डेट 12 नवंबर 1993, रनिंग टाइम 182 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटेड इरोस इंटरनेशनल, रिलीज डेट 12 नवंबर 1993, रनिंग टाइम 182 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी,
Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक वाज composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक वाज composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the
sole lead, his first as an anti-hero. In addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut, Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero. In addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut, Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero. In addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut, Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally,
The film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units,
thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Release date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi. बजट 3 करोड़. बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे. बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Release date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi. बजट 3 करोड़. बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे. बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Release date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi.
बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan
seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut.
Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंड ट्रैक वॉज कंपोज बाय अनु मलिक। द फिल्म फॉलो ए यंग मैन प्लेड बाय खान seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंड ट्रैक वॉज कंपोज बाय अनु मलिक। द फिल्म फॉलो ए यंग मैन प्लेड बाय खान seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally,
The film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year.
आइए इस मूवी को अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। Distributed Eros International, released date 12 November 1993, running time 182 minutes, country India, language Hindi, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। Distributed Eros International, released date 12 November 1993, running time 182 minutes, country India, language Hindi, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। Distributed Eros International, released date 12 November 1993, running time 182 minutes, country India, language Hindi, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट 12 नवंबर 1993. रनिंग टाइम 182 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट 12 नवंबर 1993. रनिंग टाइम 182 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a
murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding
with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 नवंबर 1993। रनिंग टाइम 182 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल एंड राखी। इट्स साउंडट्रैक was composed by Anu Malik. The film follow a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most
iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi and Malik in Hindi film, and the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Release date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi. बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे. बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film, and the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक. Distributed Eros International. Release date 12 November 1993. Running time 182 minutes. Country India. Language Hindi. बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे. बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज. इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, Shilpa Shetty, Dilip Tahil, and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Sethi's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Sethi, and Malik in Hindi film, and the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी. स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर. म्यूजिक बाय अनु मलिक.
Distributed Eros International, release date 12 November 1993, running time 182 minutes, country India, language Hindi, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाजीगर मूवी का रिव्यू करेंगे। बाजीगर इज ए 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड प्रोड्यूस्ड बाय वेनस मूवीज। इट स्टार्स शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल and Rakhi. Its soundtrack was composed by Anu Malik. The film follows a young man played by Khan seeking to avenge the fall of his family by going on a murderous rampage. The movie is loosely based on the 1991 film A Kiss Before Dying, which was adapted from Iran Levin's 1953 novel of the same name. Bajigar proved to be Khan's breakthrough role as the sole lead, his first as an anti-hero, in addition to Kajol's first commercial success and Shetty's film debut. Bajigar was released on 12 November 1993, coinciding with the festival of Diwali. Made on a budget of 30 million rupees, the film emerged victorious at the box office with a worldwide gross of 150 million rupees, ranking as the fourth highest grossing Hindi film of the year. Additionally, the film has become a cult film over the years due to its suspense story, screenplay, soundtrack, and performance of the cast. It was the first collaboration between Khan and Kajol, who went on to become one of India's most iconic on-screen couple and helped establish Khan, Kajol, Shetty, and Malik in Hindi film. And the soundtracks sold over 10 million units, thus becoming the highest-selling album of the year. आइए इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी। स्टार्टिंग शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, जॉनी लीवर। म्यूजिक बाय अनु मलिक। डिस्ट्रीब्यूटेड इरोस इंटरनेशनल, रिलीज डेट 12 नवंबर 1993, रनिंग टाइम 182 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस 15 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।